हेलो फ्रेंड्स, आज एक छोटी सी प्रॉब्लम मैथ्स की डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्री एंड एरिया। तो इसमें ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है कहीं और एरिया भी इन्वॉल्व है, सो काइंडली फोकस ऑन दिस। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि 3 स्क्वेयर्स हैं, सबका साइज सेम है एंड दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड as shown in the diagram. So we have 3 squares of same size. They are placed in this fashion, in this manner. The each side is A inches. This is A inches each dimension, and let us label these points A, B, C, D, E, F, G and H, and I join B to G. I join B to G, and then we join A to D. And you know the problem is to find the area of this triangle. Okay, you may call it this point, you may call it M and you may call it N. And the problem is area of the triangle BMN. So we have to find what is the area of the triangle BMN. तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। See, mathematics is a game of ideas. तो कैसे इसमें आइडिया लगता है, ये क्वेश्चन कैसे चलेगा आगे, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा। एरिया और ज्योमेट्री का कंबाइंड प्रॉब्लम है। तो हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD is congruent with the triangle BFG, is congruent with the triangle BFG. ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे कॉन्ग्रेंट हैं भाई, आप देख लीजिए। एक साइड है 2A और BF है 2A, CD है A और GF है A। तो थर्ड साइड, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो थर्ड साइड आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज √5A आएगी, तो AD भी √5A है। तो ये बात तो क्लियर है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं SSS क्राइटेरिया से। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं आपको बताऊं, एंगल BA, हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे थे ना, तो एंगल CAD is equal to the angle GBF, and let us say both are equal to alpha. So I'm sure this angle, if this angle is alpha, this angle is also alpha. And let me tell you the other acute measure, if this is beta, I'm sure this is also beta. और अब यहां पर एक बड़ी प्यारी चीज आती है कि अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। किस तरीके से? बिकॉज यू नो BE is parallel to CD. BE is parallel to CD and AD is the transversal. AD is the transversal.
सो अगर AD ट्रांसवर्सल है, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट द एंगल बीटा, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द बीटा, आई एम सॉरी, दिस इज बीटा, एंड यू नो दे विल बी इक्वल एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. मैंने गलत मार्किंग कर दी थी, तो मुझे मालूम था यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हमने. सो AD इज द ट्रांसवर्सल, सो these are corresponding angles, and since the corresponding angles are equal, so this angle is beta. And you know, alpha and beta are acute angles in a right angle triangle, so it is clear that alpha plus beta is 90 degree. So similarly, in triangle BMN, the angle BNM is 90 degree, because alpha plus beta is 90, so the third angle is also 90. So one thing is sure, that triangle BMN is similar to the triangle ACD. तो तीनों मतलब ये दोनों triangles जो हैं वो similar हैं, because they are equiangular, because these triangles are equiangular, so मैं कह सकता हूँ कि ये similar triangles हैं. So लिखिए, since triangle BMN and triangle ADC are equiangular, therefore they are similar. It is similar to the triangle BMN is similar to the triangle ADC. Because these triangles are similar, that means their shape is same, so that means corresponding sides are proportionate. So अल्फा के corresponding side है हमारे पास MN, और इस triangle में अल्फा के corresponding side है CD, बीटा के corresponding side है BN, और इस ट्राइंगल में बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AC, और हाइपोटेन्यूज इज BM, and here the hypotenuse is AD. So because the triangles are similar, sides are proportionate, corresponding sides are proportionate. So this is all we get. Do you know the value of MN? No, I do not know how much is MN. No issues. But do you know how much is CD? That's right, CD is A. Do you know BN? No, at this stage I do not know BN. But do you know the length of AC? That's right, it's 2A. Do we know the length BM? Yes, in the third ratio we know the length BM. हमें BM पता है. कैसे पता है? In triangle ACD, please observe the triangle ACD. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. In triangle ACD, BM is parallel to CD. BM जो है वो CD के parallel है. And you know B is the midpoint of AC. So from the corollary of midpoint theorem, 10th class में हमने पढ़ी है midpoint theorem, the line passing through the midpoint of the first side, the line passing through the midpoint of the first line and parallel to the third intersects the third side, intersect the opposite side in the midpoint. So it is clear to me that M is the midpoint of AD. So M is the midpoint of AD. I repeat, midpoint theorem की corollary. If we have a triangle ACD and B is the midpoint, the line passing through the midpoint of AC and parallel to CD will intersect the opposite side in the midpoint. So it is clear that M is the midpoint of AD.
So if B is the midpoint, M is the midpoint, the line segment joining the midpoints is half of the third. So I'm sure this dimension is a by 2. So this dimension is a by 2. And what about AD? Well, it is the hypotenuse. So AD is 2a square plus a square under the root. So it is 5a square under the root 5a. So this is under root 5a. So from the third ratio it is clear that mn upon a, तो मैं इसे यहां ले आता हूं. From the third ratio it is clear that mn upon a is equal to bn upon 2a is equal to 1 upon 2 root 5. So compare the first ratio and the fifth. So I'm sure mn is a upon 2 root 5 and bn is a upon root 5. So it's a right angle triangle. So area of BMN, this is the symbolic representation. Area of the triangle BMN, ये इस तरह की ब्रैकेट में लिखा जाता है ज्योमेट्री में. तो area of the triangle BMN, because it's a right angle triangle, so its area is going to be half base, BN is the base, and the altitude is MN, because angle N is the right angle. In this triangle, it is right angled at N, so half base into altitude. Please put the value of BN, it is A upon root 5, MN, A upon 2 root 5, and you get A square upon 5 into 4, 20. The area of the triangle BMN, is A square upon 20. तो basically ये जो triangle था BMN, ये हमारे एक given triangle के साथ उसकी shape similar थी. तो अगर शेप सिमिलर है, सिमिलर फिगर्स हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि साइज में क्या रेशियो है. तो अगर ये मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, एक और आइडिया हम इसमें यूज कर सकते थे कि अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर हमें रेशियो पता हो तो एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो. तो उस आइडिया से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन हमने इंडिविजुअल साइड्स निकाल ली. सिमिलैरिटी इसमें यूज होगी और सिमिलैरिटी यूज होने के बाद फिर इसका एरिया आ जाएगा. तो राइट आंसर इज A स्क्वायर अपॉन 20. सो इस तरह के और क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस देखने के लिए आप इस चैनल पर आ सकते हैं. और 10th के 9th क्लास के 10th क्लास के 11th के 12th के सभी सिलेबस से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मैं यहाँ पर क्वेश्चंस पिक करूँगा. डिफरेंट आइडियाज़ पर बेस्ड होंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर लाऊं कि जो यूजुअली आपको आपके स्कूल क्यूरिकुलम, स्कूल बुक्स में नहीं मिलते. सो जस्ट टू शेयर द आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़, तो उसके लिए ये इस तरह के क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा. और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए, IIT की प्रिपरेशन के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.